हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टॉप ऑर्डर कंसिडर करी थी टॉप टीम्स की, नाउ वी कंसिडरिंग द बेस्ट फास्ट bowling options available for some of the teams, and obviously the four teams that I've kind of selected for this today is Australia, New Zealand, Pakistan and India. And before I dive into it, guys, make sure you leave a like rating on this video, make sure you subscribe, make sure you follow us on all social media pages. Daily World Cup content आने वाला है, daily streams आने वाली है, daily reels आने वाली है. You don't want to miss out. Basically, I'm trying to do as much as I can to make sure that you guys are entertained with the content that you guys get, whether it's between getting professional stats, whether it's getting comedy videos. I'm going to try and make sure that everyone's kind of satisfied with what they get. Let's dive straight into it. पहले तो before I discuss about any of the four teams that I talked about, मैं कहना चाहता हूँ कि यार मैंने इंग्लैंड को इसलिए नहीं रखा बिकॉज मुझे उनके अभी समझ में नहीं आ रहा कि कौन होगा पॉसिबल fast bowling options. Jofra Archer was considered as one के यार ठीक है इंजरी से वापस आएगा, maybe he'll start. कोई आइडिया नहीं है, उन्होंने भी कोई ज़्यादा हिंट्स दी नहीं है. जो प्रोफेशनल स्क्वाड है उसमें भी कोई ख़ास बॉलर्स है नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि उनकी फास्ट बॉलिंग इतनी इनक्रेडिबल होने वाली है. फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, आई थिंक स्पिनर्स इंग्लैंड के पास हैं एक दो, आदिल राशिद, मोइन अली, आई थिंक देर बोथ प्लेइंग एज वेल. तो somewhere along they will rely on their spinners a lot more than fast bowling options, and maybe their batters or the depth in batting that they have to make sure that they can achieve the higher scores comparatively to other teams. But diving straight into it, the four teams that I selected, India, पहली बात तो home team, home conditions, यार उनके bowlers तो आप spinners हो, medium pacers हो, कुछ भी हो, I think in general you will have to give them a bit of an upper hand because of home conditions. And Bumrah 72 matches, 121 wickets. मैं बहुत कम बोलता हूँ बुमराह के बारे में because I think everyone knows कि उसकी क्या capabilities हैं and क्या skills हैं, and वो एक थोड़ी unorthodox fast bowling कह लो because of the action, because of the angle that he hits at. That has not been able to be picked up by a lot of batsmen around the world. Something Malinga kind of took advantage of during his time as a bowler, the way he used to dominate. And remember that Malinga kind of World Cup in 2011, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, but Bumrah could have one of those World Cups, and his stats in Asia as well are pretty decent. Obviously most of those games played in Asia are in India itself. Mohammad Shami, extremely experienced, 162 wickets 90 में, almost 2 wickets a game. That's exactly what you want from your top two bowlers, and that is kind of something that India will be looking at, because Shami के साथ बस एक मसला ये है कि his wickets are mostly taken outside of India, and his kind of record in India isn't as good as maybe Bumrah or Siraj, who I'm going to discuss about in a bit. And उसका average थोड़ा ज़्यादा है, 35 है comparatively, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होता है. His most of his wickets come from England and Australia, because obviously fast pitching bowlings hai. Or Mohammad Shami doesn't have a lot to offer as a spin, not as a spin, as a pace bowler. वो थोड़ा he relies on the ball being able to swung a little bit, those fuller balls or those really short balls, and those kind of catch practices, if you want to call them, for those fielders. So maybe not as strong as of an option as Bumrah. And I would say even to a certain degree to Siraj. 24 matches, 43 wickets, almost to a game, 20 का average, and India में he is the top one in terms of stats when compared to Bumrah and Shami and some of the other bowlers who aren't in the squad anyways. So for India, I feel like they've got a decent one, and I think India का plan ये है कि भाई हम लोग पहले 10-15 ओवर, लास्ट के 10-15 ओवर पेस से कराएंगे, बट बीच में we've got Shardul Thakur for a few wickets, we've got Ravindra Jadeja coming in, Akshar Patel and Kuldeep Yadav, one of them will be playing as well. So India has got a lot of bowling options in their team, and they know कि यार ठीक है हो जाएगा हम लोग से. We don't need to rely on fast bowlers to be able to produce those wickets. But on the other hand, the other team that I'm going to talk about, Pakistan, heavily rely on their fast-paced bowlers. Shaheen Shah Afridi, Naseem Shah, Haris Rauf, मचा दिया है भाई पाकिस्तान ने एशिया कप में. The way they've been taking wickets, these guys, 10 wickets against India, 7 against Nepal, if I remember, and then 7 against Bangladesh as well. So absolutely incredible. They've got good spin options as well, and I think if I say it in the words of Rohit Sharma, जिसके लिए मैंने उसको बहुत सुनाया था, they've got a really good bowling lineup, which I think India doesn't have the capabilities to match. 72 wickets in 37 matches, almost to a game, 20 की average है. एशिया में और कम हो जाती है, obviously पाकिस्तान में थोड़ी pace pitches है तो थोड़ा stats misleading है. But one thing to note out for Naseem Shah, pure wicket taking
बॉलर है, 18 का एवरेज, 24 विकेट्स इन जस्ट 9 ODIs इज़ इंक्रेडिबल. हारिस रऊफ इज़ वेल 23 गेम्स में 44 विकेट्स. तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत अच्छे अच्छे हैं. एंड तीनों इनके बॉलर्स जो हैं मेरे हिसाब से विकेट टेकिंग बॉलर्स है. दे नॉट जस्ट बॉलर्स जो आपको रन्स बचाएंगे, जो आपको डॉट बॉल्स देंगे और गुड ओवर्स देंगे, 2-3 रन ओवर्स देंगे, बट दे विल हैमर एट दोज स्टम्प्स, दे विल हैमर एट दोज एजेस एंड मेक श्योर दैट द बैटर इज़ अनकम्फर्टेबल. एंड दैट्स व्हाट्स बेस्ट अबाउट फास्ट बॉलर्स, बिकॉज समटाइम्स ठीक है समटाइम्स विकेट्स नहीं आते. मे बी विद इंडिया व्हाट आई हैव सीन इज समटाइम्स जब बॉलर के पास विकेट्स नहीं आते वो लोग कुछ और ट्राई करने लगते हैं और उसमें दे कंसीड अ लॉट ऑफ रन्स. विद पाकिस्तान व्हाट आई हैव नोटिस इज देयर बॉलर्स हैव द कैपेबिलिटी टू रियलाइज कि ठीक है आज विकेट्स नहीं मिलेंगे, बट इफ आई टारगेट दिस एरिया he'll only go for singles. He can't hit me for a 6. He can't hit me for a 4. So that's something that Pakistan will be backing off of. And obviously spin options here, which we'll discuss in another video. And talking about the kings of fast-paced bowling, yeah, I think the strongest team coming into this World Cup, in my opinion, Australia, Pat Cummins, Mitchell Starc, Josh Hazlewood. That is a star-studded lineup. Experience, wickets, every condition में Mitchell Starc IPL खेल चुके बहुत बार. Josh Hazlewood under Mahendra Singh Dhoni in CSK played so much of IPL as well. Pat Cummins, Kolkata Knight Riders. So all three of them have a lot of IPL experience, and I would say they are quite good in Indian conditions. And then you've got good spinners as well for Australia to back them up with, whether it's all rounders like Glenn Maxwell या Ashton Agar जो वो भी हैं स्क्वाड में. Josh Hazlewood का बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उनके एवरेज है एशिया में वो थोड़ी ख़राब है comparatively to the rest of the kind of bowlers, but Pat Cummins and Mitchell Starc are the top line bowlers heading into this World Cup. And obviously इंडिया जैसे stats नहीं है इन लोग के, like Indian bowlers की तरह इंडिया में stats नहीं है क्योंकि इतना sample size data नहीं है. But at the same time New Zealand has also got a surprisingly good bowling lineup, if you want to say, in terms of pace. And New Zealand का हमेशा से pace एक strong point रहा है, which is why they kind of played so well in that 2019 World Cup. And throughout the time you see New Zealand at home, whether it's at Australia, whether it's at England, they do relatively well in bowling, and that's because Trent bowled a lot of experience. 99 ODIs played, 187 wickets taken, so it just goes to show what he can achieve. And he's good in India, and जहाँ तक IPL पे देखा है उसको, जहाँ तक इंडिया के अगेंस्ट देखा है कुछ bilateral series में, he's been good only with the new ball. He doesn't have the ability to be able to reverse it or anything. तो काइंड ऑफ न्यूजीलैंड के लिए बैकफायर कर सकता है, बिकॉज मेरे हिसाब से उनके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस इतने अच्छे हैं नहीं. मीडियम पेसर्स हैं एक दो, बट एट द सेम टाइम कुछ भी हो सकता है. एंड न्यूजीलैंड ने अपनी थोड़े ऑप्शंस खोले में, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने अपनी लाइनअप अनाउंस नहीं करी है. टिम साउदी इज़ वन दैट्स ऑलवेज गोना बी कंसिडर्ड एज a senior fast bowler. 154 matches में 210 wickets. Not a relatively wicket taking bowler, but you know average से पता लगता है कि यार ये अपने runs constrict कर सकता है. जो इकॉनमी है उसकी वो भी काफ़ी थोड़ी कम है. एंड ही इज़ बेटर सूटेड फॉर इंडियन कंडीशंस दैन ट्रेंट बोल्ट, आई वुड से, इन माय पर्सनल ओपिनियन. एंड he's known for his great bowling towards the end of the innings, which is kind of what you need in matches where you want to defend those last 50-60 odd runs in the last 5 overs or 6 overs, whatever. Lockie Ferguson, Matt Henry and Kyle Jamieson, I've put all of these three in kind of the same area. बाकी जो जितनी भी टीम्स हैं उनके तो सर्टन है कि भाई यही तीनों आएंगे, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया. इवन तो पाकिस्तान ने अपनी स्क्वाड अनाउंस नहीं करी है, वो पता है कि सबको कि यार यही आने वाले हैं. बट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का कुछ भी हो सकता है. मैट हेनरी, काइल जेमिसन, बोथ ग्रेट बॉलर्स. तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना IPL में ना इंडिया में खेलने का, तो मे बी दैट इज़ वाई आई पुट इन लॉकी फर्गसन अहेड ऑफ देम. 53 मैचेस में 85 विकेट्स, 31 का एवरेज, 5.6 की इकोनॉमी. नॉट द बेस्ट, कहीं ना कहीं यू नो ऑन द वीकर एंड. आई थिंक ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए तो ऑन द वीकर एंड ऑफ द 4 टीम्स दैट वी आर काइंड ऑफ डिस्कसिंग अबाउट टुडे हियर. एंड it's something that they will have to look into as well, because मेरे हिसाब से they are good competitors. New Zealand are those teams, is a team जहाँ पे they do tend to come into the World Cup as underdogs but perform better than any other kind of rest teams. So you can't rule them out fully, but at the same time अगर मैं देखूँ चारों टीमों की lineups bowling की, तो मैं न्यूजीलैंड को आई थिंक 4th पोजीशन पे रखूँगा. एंड इफ़ आई हैड टू डू इट आई वुड गो ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड. एंड द रीज़न आई से दैट इज़ बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के पास न्यू बॉल बॉलर्स भी हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है रिवर्स करने का, उनके पास एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा खेलने का. एंड पाकिस्तान ऑब्वियसली यार जब रोहित शर्मा ने एडमिट कर दिया पाकिस्तान के पास ज़्यादा अच्छे बॉलर्स इंडिया से, तो मैं कौन होता हूँ इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर रखने के लिए. बट इंडिया का जो कम बैक है वो है फास्ट स्पिन बॉलिंग पे, और होपफुली the other areas which we'll discuss throughout the World Cup, before the World Cup starts actually, and throughout those videos that I upload every single day. So if you guys are interested in those videos, stats ke bare mein, funny videos as well, all of them are coming up right before the World Cup. And then obviously World Cup mein sara content aane wala hai. Every single day we'll upload videos, shorts, social media pe. So make sure follow karo yaar, follow karo, aur I'll make sure that you guys have fun. And
I mean, leave a like rating on this video and comment below what your thoughts are. And if you had to rank all these 4 teams, what would you do? And I'll see you guys next time.